J. Hassan, is this screen visible to you? Yes, sir. Okay, that's great. So we will start our today's lecture, which is about this is I think this is lecture number 15. This is lecture number 15. This is lecture number 15, which is about the manual assembly lines. So we would first define that what are the assembly lines, and then we will talk about the manual assembly line, and then we will carry out some of its um, line balancing algorithm. So first of all, let us see here that let me just look at the color. We would be talking about today the fundamentals of manual assembly lines, and as the name suggests, since it's the manual assembly line, so it means that there will be manual labor which will be involved in manual assembly lines. Definitely, there are going to be some automated things also. We will talk about them also. We would be carrying out the analysis of a single model assembly line. So this is what we are going to do today. And the line balancing algorithm will have actually will take into account the time and the workers. So the time would be actually the cycle time which we will be interested in. So we will carry out the line balancing according to the uh, cycle time of the product. And since we talk of the product, and product would be an assembled product, since an assembly line, so it means that we are going to carry out some assembly of the parts. So we will be talking about that. There is another terminology which we will come across, that is mixed model assembly line. So this is used for batch production. So we are going to talk about this mixed model assembly line, but we will not carry out the analysis of mixed model assembly line. So we will only be carrying out the analysis of the manual assembly line, which will be the single model assembly line. So let us move forward and talk about the manual assembly line. So what are so let us first of all um, let us jump into the second point first. So I'll just put an arrow here, and we are going to talk about this statement which says that most consumer products are assembled on manual assembly lines. So I repeat that most consumer products are assembled on manual assembly lines. So there is a big why with this, that why do we use um, manual assembly lines for the consumer products. So consumer products are those products which are used in daily life of the people. So why we use the manual assembly lines for these products? So the first thing is that we know, we have talked about it, we have read about it, that automation is going to cost you money. So the automation which is going to cost you money, that money is going to be taken out from the consumers, the pocket of the consumers. So what will happen? The prices of the daily products, daily use products will go up because of the automation. So that is why we prefer to have the assembly lines which involve the manual labor. So it means that we do not go for full automation for the most of the consumer products. So what will happen, that the expense of life will increase. So ये जो हम बात करते हैं कि महंगाई बढ़ रही है या महंगाई ज़्यादा हो जाएगी, so actually the product price of the product will go up, so that will have a crunch on the life expense of life of the common people. So that is why we prefer to have manual assembly lines. Okay. So let us see now, come over to the first points which will tell us that what are the factors which favor the use of assembly line. So number one is that the high or medium demand of the product. So we would be
looking at the products which are high or in medium demand. So definitely these are the products which are being used in daily life. So these will be in the category of high or medium demands. Number one. Then number two, the identical or similar products. So these are the soft product variety. We are talking about the soft product variety in which the identical or similar products are being used. Then the total work content can be divided into work elements. So this is what we are going to do, is that we will have a total work content which will be carried out on the assembly line, and that can be divided into work elements. So how do we define? Let us see first. We define that what are the work elements. So let me just put it here. um, Let me just write it down, that time to perform processes. So there can be 1, 2, 3, up to n processes which can be performed. So let us see. Let's put n as 10. So let's see that we had 10 processes which were to be carried out in a manual assembly line. So what we need to do is that we need to separate all these in terms of time. So process number 1 to 10, so each is going to have a certain time. So the total work content, this figure, this term, total work content, will be the total time taken. So let's see if TEK, so this is, let's see, okay, we define the processes from 1 to 10. So we say that K is I'm sorry, I think I had gone offline for a while. Yes, sir. Okay, so we are back again. Sorry, I think there was an interruption in the um, internet. So now we are back. So have you heard the terminology, or have you missed it? This term TEK. Okay, let me just repeat. So, I'll just repeat. So I'll repeat that the time which are time to perform the processes, which are the processes are from 1 to 10, and let us assume that K is varying from 1 to 10. So TAK is actually the time taken to perform the kth process. So the K is varying from 1 to 10. So this is these are the work elements actually which we have divided into processes, and the total work content. This term total work content will be given by TWC. So this will be TWC, and this will be the summation of all TEKs while K is varying from 1 to 10. So this will be the total work content which will be calculated in terms of time taken to carry out the process from 1 to 10. So this is so what
what type of, or this third point shows us that if we are able to divide the total work content into work elements, then this will be a favor. This thing will favor the use of assembly line. Okay. Then the fourth point is that if it is technologically impossible or economical infeasible to automate the assembly operation, so then we go with the manual assembly line and we do not go with the automation, because it is impossible technologically, it is impossible, or maybe it is economically infeasible to automate an assembly line. So these are the four factors which actually favor the use of manual assembly lines. All right. So why assembly lines are productive? So we need to see that why the assembly lines are products. So definitely, what we have talked about earlier is that since we divide the labor according to the processes, so let's see, 1, 2, 3, and 4 processes are being carried out. So what we need to do is that we need to divide the labor onto each process. So when we divide the labor onto each process, so what happens that the labor working on a certain process will become a specialist of that. So this is the division of labor. So the labor becomes specialized because we have divided the work content. ये हमने पिछले स्लाइड में बात की थी. So we have divided the work content into, let's see, 4 processes, and each process is carried out by a certain person or a labor, so that labor becomes a specialized labor. So this could be his learning curve. So you can have a learning curve number 1 or learning curve number 2. So this slope would tell you actually that with time how much learning is being achieved by the labor. Okay. So now the second term is the interchangeable part. So it means that this is the soft variety. So इसको हमने जो एक टर्म अभी यूज की थी कि similarities. So soft variety or interchangeable part will result in similarities, or maybe we can see that this is this is the similarity in design. Okay. And maybe if these things are identical, if these the parts are identical, so it means that these parts can fit in the one part of one product can fit into the other parts also. So it means that the components will have very close tolerances. Then is the workflow, that the workflow principle. So what happens to the workflow principle? Look at this, that products are brought to the workers. So let's see, if we have a machine here, and we have a labor working on it. So the labor is not going to go to the products or the parts. So this worker is not going to move towards the products. Rather, these parts will be brought to the machine. The worker is going to work on them, and then it is going to go out from the machine as an assembled product. Okay, so this is to be kept in mind. Now, the important thing which we are now going to talk about here is the line pacing. So what do we understand with the word line pacing? That the workers must complete their tasks within the cycle time. Within the cycle time of the line. So the pacing is that speed with which you can make or assemble the products. So the TC of a part of a machine or of a product will be the time that will be the maximum time taken by any of the machine or any of the workers. So that would be according to that, the line would be paced. Your line
movement of the line would be paced according to the maximum TC of any of the machine or any of the workstations. So it means that the other machines or the other workstations will take less time as compared to the TC of the bottleneck station or of the machine which has taken the maximum time. So the line will be paced according to that, and definitely we need to have the number of workers. We have to have the number of workers which will actually tell us that whether we will be able to put one worker on one station, or maybe we can put one worker or two workers on one station. So that will be the TC will actually depict that if we want to carry out something with more speed, with more we want to do it with more numbers. So maybe the bottleneck station can have two workers and simultaneous assembling can be done. This is what we have studied earlier also. So let us move forward and now look at the definition of the manual assembly line. So what we have been talking about manual assembly line. So this is actually the textbook definition of manual assembly line, which says a production line consisting of a sequence of workstations where assembly tasks are performed by a human worker as the product moves along the line. I repeat, the production line consisting of a sequence of workstations where assembly tasks are performed by human workers as the product moves along the line. हमने इसको पहले डिस्कस कर लिया था. This is just the definition, book definition. So the manual assembly lines, they are organized to produce a single product or a limited range of products. We know this, we have talked about the soft variety as well. Now, each product consists of multiple components which are joined together by various assembly work elements. ये भी हमने बात कर ली हुई थी कि जो assembly या work elements हैं, we can divide the total work content in the work elements, and we know that total work content is the sum of all the work. So I'm going to write it down here. The total work content can be written as the summation of work content number 1 plus work content number 2 plus, और इसको मैं यहाँ तक ले जाऊँ, work content number n. So here we have talked about it, that total work content is actually the summation of all the work content elements जो कि हमने एक total work content को different work content elements में divide कर लिया था. Okay, so now let us talk about the manual assembly line, that how does it going to look like to us. So if we see here, so these are the manual assembly stations. So this is station number 1, 2, 3. Then these stations go up to n. So each worker is assigned to a station. So these parts, they come from, these are the baseline parts. So these are called the base parts. So it means that these red parts, they are coming onto some kind of conveyor or some kind of belt which comes to station number 1. Then there are certain parts which are added onto this red part. Then it goes to the next station. Then there are certain more parts which are added, and finally we get the completed assemblies in which the base part goes through all the manual assembly operations, through all these stations, and then we can find out that we can have a completed assembly at the end of the unit. So the configuration of the manual assembly line with n manually operated workstations. So this you can see that there are the n manually operated workstations through which the base parts are moving and the components are added on each station. So manual assembly line, the products are assembled as they move along the line. We have talked about it earlier. So at each station, a portion of the total work content is performed on each unit. So इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि we have
divided the total work content into different work contents. So each station carries out, let's see, one work content, which is the portion of the total work content. So base parts are launched onto the beginning of the line at regular intervals. और वो regular interval किसके बराबर होगा? That will be equal to the cycle time. और cycle time किसका? जिस जो कि max है. तो इसमें क्या होगा कि कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे या कुछ ऐसे स्टेशंस होंगे, पार्ट्स नहीं, कुछ ऐसे स्टेशंस होंगे which will remain idle for a certain time, जिनका के cycle time would be less than the maximum cycle time of the product. ठीक है जी. So the workers, they add component and they progressively build the product. Okay. Assembly workstation. So a designated location along the workflow path at which one or more work elements are performed by one or more workers. So it means that at an assembly workstation, you can perform one or more work elements. So let's say you can see कि हम कहते हैं कि work content 1 और work content 4 जो है वो किसी एक station 1 के ऊपर carry out हो रहा है, and then we have another station जिसके ऊपर work content 2 और work content 3 perform हो रहा है, which can be given the name of station number 2. ठीक है. So इस तरह से अभी, और यही एक्चुअली वो बैलेंसिंग है, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि लेट्स सी कि स्टेशन नंबर 1 पे वर्क कंटेंट 1 और 4 हो रहा है और 2 पे 2 और 3 हो रहा है. तो ये एक्चुअली वो लाइन बैलेंसिंग है, या ये वो लाइन की एक peculiarity या specificness है जो कि we are going to talk about today. So the work transport system can be manual or those can be, and that can be mechanized also. ठीक है. So manual भी हो सकता है और mechanized भी हो सकता है. Okay. So let us move forward and see कि ये mechanized और ये जो है ये कैसे हमें दिखेंगे. So let's see the manual work transport system क्या होगा. The work units are moved between station by the workers without the aid of powered conveyor. So कोई भी एक कन्वेयर है वो पावर्ड नहीं है, इसका मतलब है कि वो खुद से नहीं चल रही. तो क्या हो रहा है कि वर्कर्स they are either pushing things, pushing the elements, pushing the items onto the conveyor. ठीक है. So this is something which is called the manual work transport system. So these are two types of these manual work transport system, that the work units can be moved in batches. So what does this mean? That how can we move those in batches? So we can either, let's see, we accumulate five items and move to next station. So इस तरह भी हो सकता है, या we can use the work units move at one time. So जो पार्ट बनता जा रहा है उसको हम आगे मूव कराते जा रहे हैं. ठीक है. Now what would be the what would be the problems which we can see, we can come across? So first thing is starvation, या starving of stations. So that station which has the least TC, the station which has the least TC, so that will starve for the next part. So let us see, let me just write it down. What does this mean, starving? Starving means that you do not get the next part, you do not get the next part after you finish processing, after you finish processing of one part. So you had a part on your machine, you finish your work on that part, and since you took less time than the TC, you had the least TC of your, so the next part will not come to you because it was behind you, and the machine behind you or the station behind you had a larger TC. So this is the problem which we will face while
starving stations. Then blocking of station. So the station which has the maximum TC, and that will be called as the bottleneck station. So there is going to be a piling up of items. So there is going to be a piling up of items at the bottleneck station. And then we may go for no pacing. If we do not pace our line, so it means that we are setting it free. So everybody is doing the work at its own pace. So that might be a problem while we are going for the manual work transport system. ठीक है. So ये तमाम प्रॉब्लम्स इनको सॉल्व करने के लिए हम ये जो मैनुअल असेंबली लाइंस जो है इनकी बैलेंसिंग को हम पढ़ेंगे. So I'm just introducing you to the problems which are being faced while we are talking about the manual work transport system. Work transport systems क्या हैं? The work units are moved by powered conveyors or other mechanized operation. और इसमें आप देखिएगा कि we will be taking into account the cycle time. Again ये time के मुताबिक move कर रहे होंगे and these will be the cycle times. ठीक है जी? Then work units attached to the conveyor. So इसका क्या मतलब है? Work units are attached to the conveyor. So इसका मतलब है कि they are being worked upon. These parts are being worked upon while placed on conveyor. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्ट जो है वो कन्वेयर के ऊपर ही रहेगा. The conveyor will move and come in front of you, in front of your station, and then you will work on the part. It will remain on the conveyor, and then after some time it will move forward. So this is something in which the work unit is not removed from the conveyor. The second thing is, the second category is that the work units are removable from the conveyor. So what do we do? हम conveyor हमारे सामने आके रुकती है, we have a part on it, we pick it up, we place it on our station, we will. अब अगर वो move भी कर रही है आपकी, next move भी कर जाती है, so the part is still with you. So आप क्या करेंगे कि आप उसके ऊपर अपना काम पूरा करेंगे, then you will again put it on the conveyor. इसमें भी वही प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो स्टार्विंग हो जाती है to those stations which have low TCs, and maybe the incomplete units will start flowing bottleneck station में. अगर work units they remain attached with the conveyor, so the high TC में जहाँ थोड़ा सा आपने रिलैक्स हुए या जहाँ थोड़ा सा आपने हायर TC ले लिया, TC जितना आपका था allowable TC उससे थोड़ा सा आपने टाइम ज़्यादा ले लिया, so the incomplete unit will start flowing into the system. So इसको भी हमने वो करना है, इसका भी we need to take care of this aspect also. तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम आहिस्ता आहिस्ता now we are going towards the solutions. ठीक है? कैसे है? One of the solution can be the mechanized transport system में हम continuous transport, ये भी जो हमने बात की थी उसको हम अब कि जी जो कन्वेयर है उसको चलाने के लिए हमने जो ये बात यहाँ पे की थी, सो हम उसको ज़रा अब टेक्स्ट बुक का नाम देने लगे, जो टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन. तो कंटिन्यूस ट्रांसपोर्ट क्या है? कन्वेयर मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, सो एडजस्ट स्पीड अकॉर्डिंग टू द टीसी ऑफ ईच स्टेशन. ये जो आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है कि एक कन्वेयर लेट्स सी बिल्कुल ऐसे स्लो मूवमेंट वो करती जा रही है, इट इज कंटिन्यूस ट्रांसपोर्ट. और जितनी देर वो पार्ट आपके सामने से गुजरता है आपके स्टेशन से, you work on that product or on project on that item while it is moving on the conveyor. So this is the continuous transport system. The second is the synchronous transport system, that the work units are moved simultaneously with stop and go. So this is the intermittent motion to the next station. So क्या है? कन्वेयर मूव करके आपके सामने आती है, इट स्टॉप्स फॉर अ वाइल, और वो जो स्टॉपेज है
या वो स्टॉप होने का टाइम इज अकॉर्डिंग टू द साइकिल टाइम, द मैक्स साइकिल टाइम. So you work on the product and then you finish your work, and then the conveyor moves to the next intermittent movement. So the conveyor carries out the next intermittent movement, so you have then a new part coming in front of you. So this is called a synchronous transport. So इसमें हम क्या करते हैं एक्चुअली कि हम जो मैक्स टीसी है उसको अपना रेफरेंस बना के उसके मुताबिक मूव करते हैं. The third is the asynchronous transport. Asynchronous transport क्या है? The work units are moved independently between stations. What does that mean? It means that each movement between the stations will be independent. Independent कैसे होगी? कि मेरे I am working on a station. अभी मैं इसके आपको graphical representation दिखाता हूँ. I am working on a station which takes a TC which is less than the bottleneck station TC. So मैं अपना काम करके I will move my part. दूसरा काम part move कर दिया, तीसरे पे काम किया part move कर दिया. तो what will happen? जो part आगे नजर आ रहा है, which is जो अगले स्टेशन पे part जा रहा है, वहां पे it will start piling up. ठीक है? So let me just show you this. That these are the types of mechanized work transport system. So पहला क्या था कि the conveyor is moving at a constant speed. So if it is moving in x direction, so there will be a constant velocity vc जिससे कि ये move करता रहेगा. So this is the continuous transport system. This is the synchronous transport system. Synchronous transport में क्या है कि ये देखें, ये move किया, then it will remain stationary at station I+1. So part number 1 यहाँ पे होगा, part number 2 इसको otherwise होगा. सॉरी, पहले इसको मैं ऐसे दिखा लेता हूँ कि if part number 1 has reached here, तो part number 2 यहाँ होगा और part number 3 यहाँ होगा, because यहाँ से in यहाँ से होगा. So ये synchronous और ये simultaneous movement है. हर एक स्टेशन के ऊपर एक ही जितना टाइम के लिए वो रुकेगा. ये देखिए, this is the asynchronous transport. So the work units are moved independently from between stations. The queues of work units can be seen from the in the station. So let's see. Station number 3 के ऊपर आप देखें कि यहाँ पे क्यू लग गई है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेशन I जो है, ये देखें, स्टेशन नंबर I जो है, ये अपने पार्ट्स को यहाँ से आगे मूव करता जा रहा है. सो यहाँ पे पाइलिंग अप हो रही है. इसी तरह स्टेशन 1 जो I-1 था, तो इसका मतलब है कि जो इससे पहला स्टेशन है वो भी यहाँ पे थोड़ी सी पाइलिंग अप करा रहा है. सो ये क्या चीज़ है कि स्टेशन नंबर I के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं वो अपना काम टाइम पे करके एंड देन दे कैन सिट एंड रिलैक्स, कि उन्होंने अपना जितना पार्ट उन्होंने बनाने थे वो आगे दिए. तो स्टेशन I+1 जो है उसके ऊपर आप देखेंगे कि देयर विल बी अ पाइलिंग अप. सो इसमें आप देखिएगा जो मूवमेंट है वो asynchronous मोड में हो रही है. ठीक है जी. So let us move forward and then we talk about the line pacing. हम अब आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को लेके जा रहे हैं towards the operation, कि जो हमने असेंबली लाइन की बैलेंसिंग करनी है, तो हम अपने एल्गोरिथम्स की तरफ अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहे हैं. तो क्या हमें एक मूवमेंट नजर आ गई, उसको हमने स्टार्विंग की बात कर ली, हमने बॉटलनेक की बात कर ली. तो इन तमाम चीज़ों को अब हमने सॉल्व करना है आहिस्ता आहिस्ता. कैसे? विद द हेल्प ऑफ लाइन पेसिंग. सो लाइन पेसिंग क्या है? A manual assembly line operates at a certain cycle time. On average, each worker must complete his assigned task within this cycle time. So TC एक cycle time है जो कि एक लाइन का साइकिल टाइम है. So every worker must finish his or her task in this time. Okay. The pacing provides a discipline for the assembly line workers that more or less guarantees a certain production rate of the line. ठीक है, we know this कि TC जो है उससे रिलेटेड है रेट ऑफ प्रोडक्शन. सो अगर मैंने रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है
वो इंक्रीज करना है तो इसका मतलब कि मुझे टीसी को रिड्यूस करना पड़ेगा, या किसी वजह से मेरा टीसी इंक्रीज हो जाता है तो मेरा रेट ऑफ प्रोडक्शन विल बी रिड्यूस, तो ये डाउन हो जाएगा। सो अब हमने मुख्तलिफ किस्म की लाइन पेसिंग की बात करनी है कि रिजिड पेसिंग। रिजिड पेसिंग क्या चीज़ है कि मैंने एक टाइम सेट कर दिया और उसके बाद मैंने कहा कि यार इसी टाइम के ऊपर, और दैट टाइम इज इक्वल टू टीसी, और मैंने कहा कि ये टीसी के ऊपर ही अपना चलेगा। सो एक टीसी के ऊपर मुझे एक सर्टन रेट ऑफ प्रोडक्शन मिल सकता है। सेकंड चीज क्या है कि वी कैन पेस विद द मार्जिन। सो मार्जिन क्या है कि मैं जो पेस है लाइन की वो टीसी से ग्रेटर टाइम पे सेट कर दूं। Let me just write it down like this. Pace is set at more time than TC. ये मार्जिन दे दिया कि अगर कहीं वर्कर थोड़ा सा स्लो हो जाता है या अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा, किसी वजह से स्लो हो गया, फटीग हो गया, तो हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दें। ऑल्दो कि इसमें आपका जो आरपी है वो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन इसका एडवांटेज क्या होगा कि इनकम्प्लीट पार्ट्स जो है वो आपके फ्लो नहीं करेंगे। सो पेसिंग विद मार्जिन का एडवांटेज क्या है? इनकम्प्लीट पार्ट्स कैन बी एरेडिकेटेड। ठीक है जी। एंड देन वी कैन हैव अ नो पेसिंग आल्सो कि एवरीबॉडी इज गोइंग टू वर्क एट इट्स ओन पेस। सो वो जो सोल्यूशन है वो आपके आरपी को काफ़ी नीचे ले आता है कि उसमें आप कोई सेट नहीं करते पेस, एंड एवरीबॉडी इज लेफ्ट एट हिज और हर ओन विल के, वो अपनी ओन विल एंड विश के ऊपर काम करते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द, जिसके अंदर आपको बहुत हाई आरपीज नहीं चाहिए तो आप लोगों को उनके उस पर भी छोड़ सकते हैं। एंड देन दे आर गिवन इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स कैसे दे सकते हैं आप उनको कि आप उन्हें कहते हैं कि जी आपने आज 200 पार्ट बनाने हैं, you have this one shift and you have to make 200 parts, so they can work on their own pace and make 200 parts for you. So this is no pace का जो सिस्टम है वो इस तरह काम कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको सारी बातचीत बताई थी कि जी रिजिड पेसिंग क्या है कि उनको एक सर्टन फिक्स टाइम देना है, ये उसके कुछ आपको यहाँ पे डिसएडवांटेजेस कुछ लाइन पेसिंग की, रिजिड पेसिंग के नज़र आ रहे हैं। देन पेसिंग विद मार्जिन है कि उसमें वर्कर्स जो है दे आर अलाउड टू कंप्लीट टास्क विद इन अ रेंज। सो वो रेंज क्या है, वो एक अपर रेंज और लोअर रेंज हो सकती है। लेट्स सी जो इसकी जो अपर लिमिट है, द अपर लिमिट कैन बी गिवन एज द टाइम टू कंप्लीट इज ग्रेटर देन टाइम टू कंप्लीट इज ग्रेटर देन टीसी, जो मैंने ये पहले बात की थी। देन वर्कर्स एवरेज टास्क टाइम, सो हम ये कह सकते हैं कि जो एक एवरेज टी एवरेज है दैट शुड बी इक्वल टू टीसी। सो जो भी आप बैलेंस टाइम दे रहे हैं साइकिल का, तो एक वर्कर का एवरेज टाइम जो है आपने उतना देना है। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द बैलेंसिंग, दिस इज कॉल्ड द असेंबली लाइन बैलेंसिंग। ये जो हम बात कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड असेंबली लाइन बैलेंसिंग। सो ये पैसेज जो मार्जिन है ये कैसे अचीव किए जा सकते हैं, यू कैन रीड दिस। हमने इसको डिस्कस कर लिया, ये सिर्फ स्लाइड्स के ऊपर लिखा हुआ है। नो पेसिंग, नो टाइम लिमिट इज गिवन, बट वर्कर्स कैन वर्क एट एन ओन पेस, बट दे कैन गिवन टारगेट कि लेट्स सी आपने अपनी शिफ्ट के दौरान 200 पार्ट्स बनाए। ओके, सो अब मैं ये सारी चीज बातें करने के बाद नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू 3 मॉडल्स कि प्रोडक्ट वैरायटी को बनाने के लिए कैसे हम कौन कौन से मॉडल्स को देखेंगे। सो
इसमें से हम ये देखिए जो 3 मॉडल्स मैंने आपके सामने इस वक्त बनाए हुए हैं उनकी मैं बात करने लगा हूँ. So we are going to talk about the single model assembly line which is called SMAL. So इसके हम analysis पढ़ेंगे आज. इसकी हम लाइन बैलेंसिंग करेंगे. So इसमें क्या चीज़ है कि every work unit is the same. So इसका मतलब है कि we are talking about identical parts. We are talking about identical parts. Then is the batch model. बैच मॉडल क्या है कि लेट्स सी कि मैंने एक बैच बनाया 200 यूनिट्स का. सो दिस इज बैच 1. देन 100 यूनिट्स का एक और बैच बनाया. दिस इज बैच 2. सो दिस कैन टेक इनटू अकाउंट द हार्ड प्रोडक्ट वैरायटी और हर दफा आपको एक अलग बैच बनाना पड़ेगा. सो ये दिस इज कॉल्ड बैच मॉडल असेंबली लाइन. सो मैं असेंबली लाइन को सेट करता हूँ विद वन बैच. उस बैच का एक अपना साइकिल टाइम होगा, एक अपनी उसके प्रोसेसेस होंगे. सो आई सेट माय असेंबली लाइन अकॉर्डिंग टू वन बैच. आफ्टर मेकिंग दिस बैच नंबर 1, देन आई सेट माय असेंबली लाइन अकॉर्डिंग टू द बैच 2 जो मैं बना रहा हूँ और मैं बैच 2 को बना रहा हूँ. ठीक है. सो ये आपका जो BMAL जो कि बैच मॉडल असेंबली लाइन कहलाता है, ये वो सिस्टम है. लेकिन इसके हम एनालिसिस जो है वो नहीं पढ़ेंगे आज. हम अपने कोर्स के अंदर सिर्फ सिंगल मॉडल असेंबली लाइन की बात करेंगे. देन इज द मिक्स्ड मॉडल असेंबली लाइन. मिक्स्ड मॉडल असेंबली लाइन क्या चीज़ है कि वी हैव सॉफ्ट प्रोडक्ट वैरायटी and models can be assembled simultaneously without batching. So यही जो मेरे पास बैच नंबर 1 2 था, तो आई कैन जस्ट सी, आई कैन सी कि मेरे पास जो लाइन के ऊपर जो चल रहा है वो लेट्स सी 1 1 2 1 2 2. सो ये देखें मेरे पास लाइन के ऊपर इस तरह से पार्ट्स चल रहे हैं जो कि मिक्स्ड मॉडल है. बैच 1 का मॉडल, बैच 1 भी चल रहा है, बैच 2 भी चल रहा है. ठीक है. सो साइमल्टेनियस है, तो दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड मॉडल असेंबली लाइन. सो इसके भी एनालिसिस हम आज के जो लेक्चर है उसके अंदर नहीं करेंगे. हम सिर्फ पहले वाले के एनालिसिस करेंगे. ओके. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि मिक्स्ड मॉडल और बैच मॉडल इन दोनों के दरमियान इनके क्या एडवांटेजेस हैं. सो यू कैन go back home, just read this slide or listen to this lecture. So the advantages are that there is no lost production time between models. High inventories typically of batch production are avoided, and then production rate of different models can be adjusted as product demand changes. So ये इसके advantages हैं. So इसके कुछ disadvantages भी होंगे. डिसएडवांटेजेस क्या है कि लाइन बैलेंसिंग विल बी मोर कॉम्प्लेक्स. ये MMAL और BMAL की बात हो रही है क्योंकि डिफरेंट वर्क एलिमेंट्स चल रहे हैं. सो देयर विल बी लाइन बैलेंसिंग प्रॉब्लम. देन शेड्यूलिंग ऑफ द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट मॉडल कैन बी अ प्रॉब्लम. लॉजिस्टिक्स कैन आल्सो बी एन इशू. So cannot accommodate as wide model varieties as BMAL. So MMAL which is mixed model assembly line और batch model assembly line के दरमियान कुछ हमने एडवांटेजेस देख लिए, कुछ हमने इसके डिसएडवांटेजेस देख लिए. अब हम सिंगल मॉडल असेंबली लाइन की तरफ दोबारा वापस आ रहे हैं. तो सिंगल मॉडल असेंबली लाइन जो है वो क्या हमें बताती है कि सबसे पहले हमें क्या गिवन होगा. वी विल बी गिवन द टोटल वर्क क्वांटिटी. अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको उस एल्गोरिथम की तरफ लेके जाने लगा. सो प्लीज अपने थोड़ा सा मुझे आपकी अटेंशन और चाहिए. सो हमने टोटल वर्क कंटेंट जो हमारा वर्क कंटेंट 1 से वर्क कंटेंट n तक था, सो इनके एक्चुअली टाइम्स जो हैं वो हमें गिवन होंगे. वो टाइम्स कौन से हैं? द टाइम टेकन टू finish or to accomplish work content 1. ये टाइम टेकन होगा. ठीक है जी. सेकंड क्या है? द सीक्वेंस इन विच the elements can be performed which is restricted through this. So what is the restriction? So if you look at this flow diagram, so process 2 and process 3 cannot be performed unless process 1 is completed.
सो ये एक रिस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर कि देयर इज अ सीक्वेंस इन विच ये वर्क एलिमेंट्स जो है ये कैरी आउट होंगे. सो अगर आप प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक 1 ना हो जाए. इसी तरह 5 उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक 2 ना हो जाए, 4 उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक 3 ना हो जाए, एंड 6 जो है वो प्रोसीड करेंगे 5 और 4. ठीक है जी. सो अब हमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ, तो ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड प्रेसिडेंस डायग्राम. दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंस diagram. This is called precedence diagram. The line must operate at a specific cycle time. ये भी हमें पता है, तो हमें एक स्पेसिफिक साइकिल टाइम भी दिया हुआ है. और वो साइकिल टाइम्स एक्चुअली कैसे होंगे, वो हर एक वर्क कंटेंट का अपना अपना टाइम है, वहां से हमें एक साइकिल टाइम निकलना है. प्रॉब्लम क्या होगी बैलेंसिंग में? हमें प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि हमने बैलेंसिंग करनी है. तो बैलेंसिंग कैसे होगी? टू असाइन इंडिविजुअल वर्क एलिमेंट टू वर्क स्टेशन सो दैट ऑल वर्कर्स हैव एन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क टू परफॉर्म. सो व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू allocate the work content to a certain work station. वो कैसे करना है वो हम अभी एल्गोरिथम जो है वो पढ़ेंगे. ठीक है. वो एल्गोरिथम्स क्या है? वो ये 3 किस्म के एल्गोरिथम्स हैं which are called largest candidate rule, Kilbridge and Wester method, and ranked positional weight. So we are going to study, we are going to solve some problem using the largest candidate rule. ये दो जो है ये हम नहीं पढ़ेंगे. इनको आप जस्ट अपने नाम मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिए कि you should have an idea कि there are some more types of methods also which can be used to carry out the line balancing. We will be talking about the largest candidate rule. So before we go on to the largest candidate rule, let me just introduce certain terminologies which will be used while we are taking into account the line balancing. So let me just take it on. So DA is the annual demand for single product which will be given as units per year. S are the number of shifts per week. H are the number of hours per shift, or 50 or maybe 52 are the number of weeks in a year. So this will be given. Either you will be given a time in a year that you are going to work for 50 weeks or you are going to work for 52 weeks. So this will be given to you जैसे जैसे आपके अपने जो working hours हैं उनके मुताबिक. So the production rate is given by the formula RP DA divided by 50 if we are working with the 50 weeks. So number of shifts and then number of hours per shift. And DA is the total annual demand which we want to make. So we need to, we can calculate the production rate with the help of equation number 1. The cycle time TC is given by, ये हम पढ़ चुके हुए पहले. So this is 60 and E is the line efficiency. E is the line efficiency. And divided by RB, this is equation number 2. The line efficiency can be given by the production rate divided by the rate of cycle. This is the cycle rate. Cycle rate. This is equation number 3. Then the workload is given by equation number 4 here, which is RP into total work content, and we know that total work content is given by this. Then available time is 60 into efficiency of the line. So ये 60 according to the hours आप करना चाहते हैं into minutes करना चाहते हैं, तो this is E, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं. And then W, which are the number of workers which are required to carry out this workload, which will be taking into account this workload according to the available time.
So these are the number of workers which you will be requiring to carry out a certain workload, to accomplish a certain workload in an available time. So these are the equations which we are going to study. इनको थोड़ा सा हम modify करेंगे on the next slide. So the equation number 2 है, which was given in the form that TC is equal to 60 E over RP. So this can be modified into this. TC और RP को मैंने आपस में change कर दिया. Then वर्कलोड जो कि RP into TWC था, तो RP की जगह मैंने उसकी वैल्यू डाल दी. So this becomes another equation of workload. Then 6th number जो था, which was the workload divided by 80, तो ये मैंने कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया अपनी वैल्यू डाल के. So then ये जो मेरे पास अब W निकलेगा, this is the optimized number of workers which are required to carry out the task or accomplish the workload according to the available time. So these are the optimized number of workers. So अब हम ये देखेंगे, हो सकता है कि आप जब देखें तो पता लगे कि आपका जो ऑप्टिमाइज्ड नंबर ऑफ वर्कर है वो 3 आ रहा हो, लेकिन जब आप लाइन को बैलेंसिंग करें तो पता लगे कि आपको 4 स्टेशन बन गए. सो ऑप्टिमाइज्ड नंबर ऑफ वर्कर्स तो ठीक है, बट अगर आपको ईच स्टेशन पे एक वर्कर असाइन करना है, तो यू नीड टू गो बियॉन्ड द ऑप्टिमाइज्ड नंबर ऑफ वर्कर्स. सो इसको भी हम थोड़ा सा अभी देखेंगे. सो हम बैलेंसिंग की तरफ चले जाएं, तो बैलेंसिंग करने से पहले हमें ये तमाम चीजें जो है वो कैलकुलेट करनी है. तो लेट अस सी, मैं एक एग्जांपल आपके लिए सॉल्व करता हूं. So a small electrical appliance is to be produced on a single model assembly line. Okay. The work content of the work content of assembling the product has been reduced to the work elements. So ये आपको नजर आ रहा है कि इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ work elements जो कि इनको हम work content कह रहे हैं वो हमारे पास आ जाएंगे. These are listed in the table. So मैं अभी आपको टेबल दिखाता हूँ. The table also lists the times for each element and the precedence order. So उस टेबल में आपको हर एक का cycle time भी नजर आएगा, and you will also find out the precedence order. Which process is to be carried out before which process. ठीक है? That line is to be balanced for an annual demand of 100,000 units. So this is the DA. The line will operate 50 weeks per year. So ये आपको वो दे दिया, 50 weeks दे दिया. 5 shifts per week. So this is number of shifts S. And 7.5 hours per shift. So this is H, which is number of hours per shift. There will be one worker per station. So एक station के ऊपर एक worker की एक आपके ऊपर restriction लगा दी गई. The previous experience suggests that the uptime efficiency for the line will be 96%. So ये वो E है, which is 96%, and the repositioning time lost per cycle will be 0.08 minute. So repositioning time जो है वो हम उसको हम यहाँ पे एक टर्म मेरे ख्याल में हम पीछे यहाँ पे आपको repositioning जो है वो उसको ले आऊँ. So आपका जो टोटल टाइम होता है which is called TS, जो कि सेटअप या टोटल टाइम होता है, that is equal to actually TC plus T reposition. So ये जो TS है ये एक्चुअली वो टाइम है जो कि हम TS ये वो टाइम है जो कि आप अलाउ करते हैं टू सेटअप अ मशीन. सेटअप से क्या मुराद है कि उसके ऊपर कितना टाइम लगना है. सो TC इज समथिंग जो कि उसके ऊपर काम हो रहा है. R रिपोजिशन या पोजीशन करना है उस पार्ट को, TR वो है, और दिस इज द TS जो कि टोटल टाइम है जो कि उस स्टेशन के ऊपर. सो TS एक्चुअली द स्टेशन टाइम जो कि एक स्टेशन के ऊपर लग रहा है, जिसके अंदर उसका साइकिल टाइम जिसके ऊपर वर्क हो रहा है, और प्लस उसका TR जितना कि उसके ऊपर उसको रीपोजिशनिंग टाइम हो रही है. सो यहाँ पे आपको जो टाइम है रीपोजिशनिंग का वो 0.08 मिनट्स की फॉर्म में दिया हुआ. सो व्हाट डू वी नीड टू डिटरमिन? वी नीड टू डिटरमिन द टोटल वर्क कंटेंट, देन
required hourly production rate RP, then cycle time, then theoretical minimum number of workers, and the service time, which is TS. So this is also which will be known as the which will be used as the balanced time. So अब मैं आपको ये वन बाय वन जरा इसको साथ आपको लिंक अप करता हूँ. So this is the table. अब टेबल में देखिए क्या चीज आपको नजर आ रही है. These are the numbers, number of work elements या work contents. So ये these are the work contents. ये WCs हैं आपके. So they are varying from WC1 to WC12. Work content number 1 to work content number 12. Each work content is described here. Let's see. Work content number 1 is place frame in the work holder and clamp. It is going to take a time TEK, which is 2 minutes, 0.2 minutes, and it is not preceded by any other work content. However, if you look at 3, which is the assemble bracket to frame, it is going to take a time of 0.7 minutes and it has to be preceded by 1. So it means unless the 1 is performed, 3 cannot be performed. तो अगर if you look at these, तो आपको यहाँ से बिल्कुल एक clear view मिल रहा है कि how many work contents do you have, how much time each work content is going to take, and which work content is to be preceded by which work content. So ये मेरे सामने इस वक्त जो एग्जांपल मैंने आपको दी उसका सोल्यूशन आपके सामने यहाँ मुझे यहाँ नजर आ रहा है. सो सबसे पहला था कि TWC बनाना है. सो TWC मैंने तमाम वर्क कंटेंट को ऐड कर लिया, तो दिस इज इक्वल टू 4 मिनट्स. द रेट ऑफ प्रोडक्शन व्हिच आई नीड टू अचीव to make 100,000 parts in a year, so I have to make 53.33 units per hour. Okay. TC जो cycle time है, according to the line efficiency, that has to be 1.08 minutes. ठीक है. Then W star, which was the number of workers, optimum number of workers, so they came out to be 3.7, which is equal to 4 workers, and TS is equal to TC plus repositioning. So हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं कि यार ये वो टाइम है जिसमें अगर साइकिल टाइम में मुझे रीपोजिशनिंग करनी पड़ती है, तो मुझे वो रीपोजिशनिंग इसमें से निकालनी है ताकि उतने टाइम के लिए मैं स्टेशन को एंगेज करूं. सो दिस इज 1.08 माइनस 0.08, दिस इज 1 मिनट. तो जो सेटअप ये जो था मेरा, जिसको कि मैंने सर्विस टाइम कहा था, ये TS, एक तो हमने पहले स्टेशन का टाइम निकाला था ना कि एक स्टेशन के ऊपर कितना टाइम लग रहा है, तो उसमें TC और हमने TR को ऐड किया था. अब ये है कि ये this TS is actually the service time. Let me just write it down with this. So ये स्टेशन का टाइम, this is the service time. This is called service time. Okay. So the service time क्या है किसी एक स्टेशन के ऊपर, कि जो साइकिल टाइम है अगर उसके अंदर कोई रीपोजिशनिंग आ रही है तो that has to be subtracted from it. अब ये देखिए, ये कुछ मेरे पास ये मैंने कैलकुलेट कर लिया. अब इनकी बेस के ऊपर आई एम नाउ गोइंग टू अप्लाई द एल्गोरिथम जो कि मुझे हेल्प करेगा लाइन बैलेंसिंग में. तो सबसे पहले मैं प्रेसिडेंस की बात करूँगा. पहले मैं प्रेसिडेंस डायग्राम की बात करता हूँ. सो लेट मी जस्ट, अगर आप ये इसको जो बड़ी ये डायग्राम बनी हुई है इसको ज़रा भूल जाएं 1 मिनट के लिए. जस्ट कंसंट्रेट हेयर जहाँ पे मैं ये बॉक्स बना रहा हूँ. सो मैं यहाँ पे एक आपको बना के दिखाता हूँ. सो लेट्स सी. सबसे पहला क्या है, नंबर 1 एंड नंबर 2 इन दोनों की कोई प्रेसिडेंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि आई हैव टू परफॉर्म नंबर 1 इंडिपेंडेंटली, और इसका जो साइकिल TEK है वो 0.2 है. इसी तरह जो नंबर 2 है उसका 0.4 है,
एंड इन दोनों के लिए कोई प्रेसिडेंस नहीं है. नाउ 3 is preceded by 1. Just look at this, that 3 is preceded by 1. So मैं यहाँ से एक 3 बना देता हूँ और इसका टाइम इज 0.7. Then 4 is preceded by 1 and 2 both. See, 4 is preceded by 1 and 2. So इसका मतलब ये है कि if I make 4 here, जिसका के टाइम 4 का 0.1 है, so it has to be preceded by 1 and 2 both. Similarly 5 is preceded by 2, so मैं यहाँ पे 5 बना देता हूँ, and the 5 has a time of 0.3 and it is preceded by this. So मैंने ये सिर्फ आपको एक लाइन बना के दे दी है. So इसको आप जब आप आगे बनाएंगे, so you will come to know कि ये डायग्राम आपके सामने बन जाएगी. So मैंने आपको यहाँ तक का पोर्शन बना के दिया है. अब आगे आप काइंडली इनको देख के ये जब बनाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इस तरह की डायग्राम आपके सामने बन जाएगी. So this is the precedence diagram. Okay, so now let us move forward and now we talk about the largest candidate rule algorithm. Largest candidate rule algorithm. अच्छा, अब मैं ये जो इसके ये हैं क्या नाम है, जो ये इसके स्टेप्स हैं वो मैं 1 by 1 करूँगा and then you will come to know, you will see कि ये कैसे हमें नज़र आएगा. So सबसे पहले क्या चीज़ है? The first step is to arrange the work element in descending orders. और वो descending order will be according to TEK. This descending order will be according to TEK. So आप ये देखिए, I have made it in a descending order starting with the maximum time 0.7 to the minimum time 0.1 minute. और इसके मुताबिक, इस कॉलम के मुताबिक मैंने बाकी कॉलम्स को भी कर लिया. तो वर्क एलिमेंट नंबर 3 सबसे ऊपर आ गया and the work element number 4 has gone at the bottom. Okay, now what does our algorithm says? Our algorithm says that point number 1, start at the top and assign work elements to workers at first station, keeping in view the precedence and sum of TEK which should not exceed TS. ठीक है. So TS हमारे पास हमने जो कैलकुलेट किया था वो था 1.0 मिनट. थोड़ा सा इसको मिलना. So TS is 1.0 मिनट. तो हमें इसको ध्यान में रखना है कि ये 1.0 मिनट से ऊपर ना जाए कोई किसी भी एक स्टेशन का टाइम. When no more elements can be assigned, proceed to the next station. So जो elements आपने इस पहले को देखते हुए असाइन कर दिए, so आप फिर स्टेशन नंबर 2 पे चले जाएंगे. और जब स्टेशन नंबर 2 पे जाएंगे तो you will repeat step 1 and step 2. So this is the algorithm. और मेन क्या है? Start from the top, assign the work element to the workers at first station, keeping in view the precedence and sum of TEK. तो अब let us see, मैं इसको let me just take a color, different color, और मैं आपको ये iterations करके दिखाता हूँ. So पहले तो हम ये करते हैं, let me just make 2 stations. Let me just make 2 stations. This is station number 1. And I have assigned a worker here. This is station number 2 and I have assigned a worker here as well. So now I'm going to carry out this largest candidate rule algorithm and I'm going to assign the
work elements to the first station. So let me just pick up this color. So let us see पहला क्या है. Let me just see this. Okay. So पहला एलिमेंट है 3 का, which is preceded by 1. ठीक है. So let me just see. तो इसको मैं, इसकी प्रेसिडेंस है 3 की, तो इसका मतलब है कि इसको मैं यूज नहीं कर सकता. ओके, इसको मैं छोड़ देता हूँ. देन आई मूव फॉरवर्ड और मैं बात करता हूँ अगले एलिमेंट की, which is 8. It is also preceded by 3 and 4, so इसको भी असाइन नहीं कर सकता. 11 नहीं कर सकता. 2 मैं असाइन कर सकता हूँ क्योंकि आप देखें. So let me just put an arrow here. So मैं work content 2 यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ. And I'll just write it down क्योंकि मुझे इसका TS के साथ भी मैच करना है, तो मैं TS के साथ इसका 0.4 जो है वो लिख देता हूँ. सो मैं एलिमेंट नंबर 2 जो है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड. 10 अगेन नहीं हो सकता. 7 नहीं हो सकता क्योंकि 3 अभी तक नहीं हुआ. 5 वर्क कंटेंट 5 जिसका के प्रेसिडेंस 2 है, सो ये हो सकता है. ओके, लेट मी जस्ट पुट हियर वर्क कंटेंट 5 और इसका टाइम कितना है 0.3. तो अभी तक हाउ मच TS आई हैव accumulated 0.4 and 0.7, 0.5, 0.4 and 0.3, it is 0.7, so it is still less than 1. Okay, good enough. We can move forward because TS has not exceeded until now. So 9 is 6, 7 ये भी नहीं हो सकता. 1 is 0.2 and it has no precedence, so I can pick this up. I can pick up work content 1 and I can add its time, which is 0.2. 0.2 मैंने ऐड किया तो कितना हो गया 4 and 3, 4 and 3, 0.4, 0.3, 0.2, 0.9. So still I have not reached TS. So let me move forward. So 12 इसके साथ 11 है, नहीं है. 6 इसके साथ 3 है, 3 is not performed as yet. 4 का प्रेसिडेंस 1 and 2 है, 1 and 2 दोनों परफॉर्म हो चुके हैं, तो I can add work content 4 also with this work content 4 और प्लस इसके साथ अगर मैं 0.1 ऐड कर लूँ, so now this becomes 1.0 minutes. So देखिए कि मैंने पहले इसके अंदर वर्क कंटेंट्स जो है वो ऐड कर लिए 2, 5, 1 and 4 जो कि मेरे TS को क्रॉस नहीं कर रहे. ठीक है, अब चूंकि ये TS के बराबर हो गया, अब मैं कुछ भी ऐड करूंगा तो ये TS से ज्यादा हो जाएगा. सो इसका मतलब है कि नाउ आई कैन नॉट add any more element to this. So now I am going to move to station number 2 and I am again going to start repeating the first step. So let me just pick up another color जो कि मेरी second iteration के लिए होगा. Let's take green. So now see work content मैं अब कौन सा ले सकता हूँ. So let me just see. Work content number 3 is the first one which is preceded by 1. 1 has already been performed, so मैं work content 3 को यहाँ से ले लेता हूँ and I assign work content 3 to station number 2 और इसका मैं ग्रीन वाले का TS कैलकुलेट भी साथ साथ करता रहता हूँ. So this is 0.7. ठीक है, good enough.
नाउ गो टू 8. 8 में क्या है, 3 and 4. 4 तो हुआ हुआ है, 3 भी हो गया है, 3 भी हो गया है, 4 भी पहले का हुआ हुआ है. सो आई कैन ऐड 8. सो मैं वर्क कंटेंट 8 को ऐड करता हूँ. 0.7, 0.6. सो ये 1.3 बन गया. ओ तो इट मीन्स कि मैं 1 पॉइंट, ये इससे, ये चूंकि 1 से बढ़ गया है तो इसलिए मैं इसको नहीं कर सकता. सो लेट मी जस्ट रब इट ऑफ नाउ. सो आई कैन नॉट टेक वर्क कंटेंट 8 हियर. सो आई जस्ट सी कि क्या कोई और एलिमेंट है ऐसा जो मैं ले सकता हूँ. 11, 9 एंड 10 में नहीं कर सकता. 2 ऑलरेडी हो गया है. 10 का 5 एंड 8 है, नहीं हो सकता. 7 का 3 है, ओके, 3 पहले हो गया हुआ है. सो लेट्स पुट 7 हियर. तो मैं वर्क कंटेंट 7 को यहाँ डालता हूँ और इसका पॉइंट का, जब मैं इसका टाइम डालता हूँ 0.32. सो ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि यार दिस हैज ऑल्सो गॉन बियॉन्ड 1.0. ओके, सॉरी. सो आई कैन नॉट टेक दिस. सो लेट मी जस्ट रब इट ऑफ. सो ये भी नहीं हो सकता. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी. 7 को भी हमने डिस्कार्ड कर दिया. 5 ऑलरेडी हो गया था. 9 नहीं हो सकता, 1 हो चुका हुआ है. 12 इज 0.12. 11 नहीं हो सकता. 6 इज 3 हो चुका हुआ है. सो लेट अस सी कि इफ आई कैन पुट 6 हियर. सो वर्क कंटेंट 6 मैंने यहाँ डाला. इसके साथ मैंने इसका टाइम डाला विच इज 0.11.11. so this becomes 0.81 minutes which is less than 1. so इसका मतलब है कि मैं नंबर 2 को I can assign work content number 6. so अब चूंकि मेरा 0.81 हो गया है और I have reached to the bottom, अब मेरे पास और कोई वो नहीं है, वर्क कंटेंट नहीं है. सो आई विल नाउ मूव टू वर्क स्टेशन नंबर 3. सो ये जो 2 वर्क स्टेशन हैं इनको मैंने आपको आपके सामने कर दिया है. सो लेट मी जस्ट टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप. सो व्हाट आई हैव डन फॉर यू, दैट आई हैव मेड 2 वर्क कंटेंट्स फॉर यू, 2 स्टेशंस फॉर यू. सो दिस इज स्टेशन नंबर 1 जिसके अंदर आपको ये वर्क एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं. स्टेशन नंबर 2 जो कि मैंने ग्रीन बनाया था उसके अंदर आपको 3 and 6 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं. सॉरी मैंने इसको गलत, इसका उठा लिया कलर. दिस हैड दिस कलर. आई जस्ट मेक इट लाइक दिस. सो दिस वाज ऑरेंज एंड ग्रीन एंड देन जो अगले आपको यहाँ पे बने हुए नज़र आ रहे हैं ये आपने खुद बनाने हैं. ये रेड वाले जो ये 8 and 10 आपके पास आएगा. 3rd में 4 में 7 and 9 आएगा और 5th में 11 and 12 आएगा. सो ये जो रेड वाले हैं आई वुड रिक्वेस्ट कि इनको भी आप, जैसे मैंने आपको 1 and 2 स्टेशंस का एल्गोरिदम करके दिखाया है, आप इनके एल्गोरिदम को भी खुद करें. सो जब आप ये खुद करेंगे तो यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस दिस. तो आपको ये देखें, ये नज़र आ रहा है इस वक्त कि स्टेशन 1 के अंदर जो है ये स्टेशन 1 है. इसके अंदर आपको 1, 2, 3, 4 and 5 नज़र आएगा. स्टेशन नंबर 2 के अंदर आपको 3 and 6 नज़र आएगा. स्टेशन 4 पे 7 and 9. स्टेशन 3 पे 8 and 6. स्टेशन 5 पे 11 and 12. सो अब अगर मैं अपनी लाइन की बैलेंसिंग एफिशिएंसी, अब गौर से देखिएगा, लाइन की बैलेंसिंग एफिशिएंसी इज गिवन बाय TWC डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि हमने अर्थ स्टेशन को असाइन करने हैं इनटू दी TS. ठीक है. सो ये जब मैं करूँगा सो माय लाइन बैलेंसिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 80%. और अगर मैं अपना वर्क फ्लो बनाऊं तो वर्क फ्लो आपको यहाँ बिल्कुल क्लियरली नज़र आ जाएगा कि स्टेशन 1 से लेकर स्टेशन 5 तक
ये स्टेशंस आ गए, हर स्टेशन के ऊपर कौन कौन से वर्क एलिमेंट्स जो है वो काम कर रहे हैं. So work is flowing from station 1 to station 5 and the elements have been assigned to the stations, and then you can find out that an assembled product will be with you. So rate of production और वो सारी चीज़ें हम इससे पहले निकाल चुके थे. ये देखिए, अगर मैं यहाँ चला जाऊँ, ये तो मैंने रेट ऑफ प्रोडक्शन भी निकाल लिया, मैंने इसका टीसी भी निकाल लिया. वर्कर्स मैंने 4 निकाले थे, लेकिन चूंकि मेरे ऊपर एक कंपल्शन है कि मुझे हर स्टेशन के ऊपर एक वर्कर लगाना है, तो एक्चुअली माय नंबर ऑफ वर्कर्स विल बी 4. सॉरी नंबर ऑफ वर्कर्स विल बी 5. सो अगर मैं, इसीलिए मैंने, आप देखें यहाँ जो मैंने ऑप्टिमम नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं डाले जो मैंने वहाँ निकाले. आई हैव put the workers according to the stations which I have made. So I have put the line balancing efficiency. I have put 5 workers in it. So this will give me 80% line balancing. So that's all for this lecture. So this is the largest candidate rule algorithm which we have used for the line balancing. So I hope that if you are employed in your career or any assembly line, so you have now a fair idea how to calculate different parameters, which include the line balancing, which include the rate of production, which include the cycle time, which include the number of workers. So you can use this rule as a largest candidate rule to find out the line balancing and set the precedence and make a workflow for your organization if you are employed as a process engineer or an engineer in the assembly line. So that's all from my side today, and I hope that you have understood it well. So I'm not sure that how many people are with me online. We have 11 people. So if you have any questions, so I am available, or if we do not have any question, so then we can call this off. सर एक डायरेक्टली इसके रिलेटेड तो नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है सर कि पाकिस्तान में कौन सी इंडस्ट्रीज ऑटोमेट हो सकती हैं, और वैसे हमारे स्मॉल स्केल या मिड स्केल इंडस्ट्रीज में इतनी ऑटोमेशन हम क्यों नहीं देखते? जी देखिए, जो इस वक्त आपको इंडस्ट्रीज ऑटोमेटेड नज़र आएंगी, वो आपको सीमेंट इंडस्ट्री नज़र आती है, आपको जो व्हीकल असेंबली लाइंस हैं वो नज़र आती है, एंड वेरी रिसेंटली इस वक्त आर्मी ने अपनी असेंबली लाइन के प्रोसेस को जो है वो अडॉप्ट किया है, और विद इन 2 to 3 years टाइम जो कि ये पिछला गुजरा है, इसके अंदर द असेंबली लाइंस वर एक्चुअली मेड, और उस असेंबली लाइंस के ऊपर ये तमाम कैलकुलेशंस की गई. और एक टीम जो कि एमई कॉलेज में इस वक्त जो हमारे डीन है ब्रिगेडियर बुकाई, ही हैज़ एन एक्सपर्टीज इन मैन्युफैक्चरिंग. इसी तरह ही डॉक्टर उज़ैर हैं इस वक्त हमारे एसटी हेडक्वार्टर में, उनकी एक्सपर्टीज है. सो दे हैव वर्कड ऑन दोज असेंबली लाइंस एंड दे हैव डिजाइन्ड दोज असेंबली लाइंस जो कि इस वक्त इम्प्लीमेंट हुई है. तो रेस्ट एश्योर्ड कि ये फॉर्मूला, ये किताबी बातें, ये सारी इम्प्लीमेंटेबल है, और हमने अपनी आंखों से ये इम्प्लीमेंट होती हुई देखी है इन लास्ट 3 years टाइम, और हमारे ही लोगों ने इम्प्लीमेंट की. कोई बाहर से गोरा नहीं आया, किसी ने आके कुछ नहीं किया और कहा ओके जी अच्छा मैं आपको समझने बनता हूँ. नो, इट हैज बीन डन इंडिजिनसली बाय आवर ओन पीपल एंड द टीम which was led by the dean ब्रिगेडियर आमिर बकाई. ठीक है जी. तो तला, rest assured if these things can be implemented, these are implementable and these are being implemented. These have been implemented in the field. सिर्फ ये है कि हम अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे होते, हम यही सोचते थे कि चलिए ये किताबी बात है. ठीक है जी तला. ठीक है सर. सर ये था कोई कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से तो नहीं होगा सर, कि कहते होंगे कि 5000 में अगर लोग से करवा रहे हैं तो फिर उनको ऑटोमेशन की ज़रूरत हो? बिल्कुल, ये एक चीज़ बिल्कुल आती है जहन में. जैसे लेट्स सी इफ आई वर अ फैक्ट्री ओनर, सो मैं यही सोचूंगा कि यार मैं सस्ती से सस्ती चीज़ बताऊं ताकि वो बिके. वन. सेकंड, मेरी कंसिडरेशन क्या होगी कि यार आई शुड कैप्चर द मार्केट. सो इसका मतलब है कि अगर मार्केट
1000 पार्ट्स की है तो आई शुड बी एबल टू लेट सी कैप्चर 50% ऑफ द मार्केट। तो मुझे इसका मतलब है कि 500 पार्ट्स बनानी है। 500 पार्ट्स में मैनुअल सिस्टम से या कन्वेंशनल सिस्टम से नहीं बना सकता। तो फिर मैं कहता हूँ कि यार इफ आई वांट टू कैप्चर द मार्केट तो इसका मतलब है कि मुझे फिर किसी ऑटोमेशन, किसी असेंबली लाइन, इन चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा। फिर उसके लिए मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर मेरा एक बिजनेस मॉडल है। वो बिजनेस मॉडल मैं कैसे बनाऊंगा कि अगर मार्केट इज फॉर 10 ईयर्स, इफ आई कैन कैप्चर 50% ऑफ द मार्केट, तो मैं एक इन्वेस्टमेंट अगर आज करूं तो ये 10 साल के बाद मुझे कितना फायदा देगा। सो दिस इज द बिजनेस मॉडल विच पीपल मेक। सो ये सारी चीजें जो है ये इंटर रिलेटेड है। वी डू नॉट लुक एट ओनली कि यार बस ये असेंबली लाइन लगा दो, नो, उसकी बिजनेस मॉडल क्या है। क्योंकि अगर आप इस असेंबली लाइन लगा के अपना नुकसान कर रहे हैं तो उस असेंबली लाइन लगाने का कोई फायदा नहीं। बट हमने अपनी लास्ट 3 इयर्स में ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, जिसमें कि असेंबली लाइंस बनी हैं। असेंबली लाइंस मतलब पहले उनकी कैलकुलेशंस हुई हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हम बुक में पढ़ते हैं ना, कि पहले मॉडल बना, फिर उसकी सिमुलेशन हुई, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया। सो ये लास्ट 3 इयर्स पाकिस्तान आर्मी में ये सारी असेंबली लाइंस जो है बनी। जी, ठीक और है। कोई? ठीक है, हाँ। चलिए जी। एनीथिंग एल्स, किसी और को कोई सवाल हो? All right, Ji. So I am switching off the recording now, and